Hey guys, hello and welcome to the stream and आज की स्ट्रीम में हम लोग बात करने वाले हैं एसी में टोरिनो के मैच के बारे में। बहुत ही एक्साइटिंग गेम था। वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। इतना एक्साइटिंग फर्स्ट हाफ आई डोंट थिंक कि बहुत दिनों में देखने को मिला था। और एसी मिलान का ओवरऑल परफॉर्मेंस इस पूरे गेम में अगर कहा जाए तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। इंडिविजुअली हर प्लेयर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। फर्स्ट हाफ का परफॉर्मेंस वाज वेरी अमेजिंग बट सेकंड हाफ में काफ़ी ज़्यादा स्लॉपी थी साइड। और हमने कई बार देखा कि टोरिनो was able to create a lot of threats. you know in the second half we have seen so many attacks coming from their side. so इस मतलब गेम को ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी भी मतलब कई सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा यू नो जिसमें प्योली को वर्क करना पड़ेगा। बट यू नो अभी भी ऐसे लगता है, बट देख करके ये लग रहा है कि अटैक बहुत ज़्यादा क्लिक कर रहा है। 2 गोल्स पेनल्टी में मिले हमें, जिसके बारे में हम बात करने वाले स्ट्रीम में आगे चल के। बट लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट गोल। क्रिस्टियन पुलिसिच का जो गोल था उसमें मतलब बहुत ज़्यादा उनकी अटैकिंग अवेयरनेस को डिस्प्ले किया उन्होंने। वो शॉट मतलब बहुत ज़्यादा एक पोचर फिनिश थी। काफ़ी बेहतरीन गोल था। और उस गोल में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग फिनिशिंग दिखाई उन्होंने। और सेकंड गोल जो था मेरे ख्याल से शायद वो पेनल्टी थी, जो कि ओलिवर जिरूड ने क्रिएट ही कर राफेल लियाओ का आई थिंक पास या क्रॉस था वो, जिसमें जिरूड डक कर गए। और जिसकी वजह से जो उनके पीछे में डिफेंडर थे, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, बट यू नो ही काइंड ऑफ कंसीडर्ड अ हैंडबॉल। एंड जिसके बाद एक पेनल्टी मिलती है। काफ़ी देर तक रेफरी ने नो ऑफ द फील्ड उस डिसीजन के लिए टाइम स्पेंड किया, बट फाइनली पेनल्टी मिलती है। और जैसे ही पेनल्टी मिलती है, जरूर वेरी लीथल शूट्स डायरेक्टली ऑन द राइट साइड। एंड बहुत ही अमेजिंग फिनिश थी पेनल्टी में। आई वाज प्रीटी I thought that maybe Christian Pulisic should take this penalty, but Oliver Giroud did the job very well. उसके बाद उसके बाद 47th या 48th मिनट में थियो हर्नांडेज को एक बॉल मिलती है। आई थिंक इट वाज टिजानी राइंडर्स हु यू नो gave that pass, and after that Theo goes right in front of the goalkeeper and shoots a very amazing shot. Like it was very intelligent of him. उस पोजीशन से गोल स्कोर करना है, वाज thinking that just go for a cross, man, just go for a cross. And then क्या कह सकते हैं, इतना अमेजिंग फिनिश उस पोजीशन से गोल स्कोर करना इज वेरी like very difficult. And I have seen Theo doing this quite often. Like he has done it at least 3 or 4 times. I think he has scored a goal like this just last year as well. Don't remember the game, but yeah, I have seen this same kind of goal coming from Theo Hernandez. So goal was pretty amazing. एंड उसके बाद फर्स्ट हाफ कंप्लीट होता है। फर्स्ट हाफ में एसी मिलान ने बहुत ज़्यादा चांसेस क्रिएट किए थे, बट जैसे ही एसी मिलान अपना फर्स्ट गोल स्कोर करती है, उसके 3 मिनट के डायरेक्ट बाद यू नो टोरेनो को एक शॉट मिलता है, एक फ्री किक मिलती है, जिसको हमारी पुअर डिफेंडिंग के थ्रू जिसे हमारी पुअर डिफेंडिंग डील नहीं कर पाती जिससे। और हमारे डिफेंस ले दे करके उस बॉल को यू नो उसे रेड होने की कोशिश करते हैं, बट एक शॉट ले दिए, मतलब टोरेनो की साइड से किसी प्लेयर ने एक शॉट लिया
और वो एक पास में कन्वर्ट हो जाता है उनके सेंटर बैक पियर शूर को, जो कि आई थिंक दैट्स व्हाट हिज नेम, आई थिंक आई हैव बॉचर्ड हिज नेम, लेट मी जस्ट चेक real quick. Okay. Yep. It was, yeah, so I think he used to play for Ajax as well, and they signed him as a Bremer replacement. So he was doing pretty, well against Rafa Leao. On the first half, he had very good moments against Leao, but then Leao is very dangerous. तो उनने एक गोल स्कोर किया, आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक इट वाज अ वॉली, और इट वाज लाइक अ हाफ वॉली व्हिच माइनियन वाजंट एबल टू, आई थिंक मैनियन ने अपने हाथ से उस शॉट को एटलीस्ट टच तो किया था बट रोक नहीं पाया. सो आफ्टर दैट ऑल द सेलिब्रेशन, जितना भी सेलिब्रेशन हो रहा था वो सब शांत हो गया, एंड आई वाज लाइक, oh shit, we are going back again, and we are, you know it's just like how it was last year. And मुझे लगा नहीं था कि एसी मिलान उसके बाद रिकवर कर पाएगी. Sorry. But again, this is the new season and this is the new team, so everything went very well. After that, I think right after that, uh, जरूर का गोल आता है पेनल्टी के थ्रू, जिसमें राफेल लियाओ का, मतलब राफेल लियाओ उसके बाद बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है. फर्स्ट हाफ में राफेल लियाओ स्टार्टिंग बहुत स्लो रहती है उनकी, उतना कुछ खास कर नहीं पाते हैं, बट फाइनल थर्ड में जाते हैं, अटैकिंग पोजीशंस में बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, बट उनके क्रॉसेस और उनके पास और फाइनल थर्ड में डिसीजन मेकिंग अभी भी, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव उतनी ज़्यादा नहीं है. बहुत ज़्यादा चांसेस क्रिएट कर सकते थे. आज का परफॉर्मेंस अगर ले आओ की बात करें तो काफ़ी, आई वुड से कि प्रिटी एवरेज, you know taking that into consideration how big of a player Rafael Leao is for AC Milan. And अगर आई थिंक लियाओ की इस सीजन भी स्टार्ट पिछले सीजन की तरह स्लो ही हो रही है, बट यू नो आई थिंक ही विल pick up his form with all this quality up front in the attack, you know, with Christian Pulisic and Noah Okafor, Samuel Chukwueze, and Tijani Reinders, of course. इतने सारे क्वालिटी वाले प्लेयर्स के साथ आई थिंक राफा लियाओ भी बहुत ज़्यादा, he will also get much more chances because आप इस मैच में देख सकते हैं that everyone was trying to find Rafael Leao, but the team wasn't really dependent on Leao. Unlike last season, जहाँ पे मतलब एक एक पास राफेल लियाओ से होके जाया करता था और हर अटैक के मूव राफेल लियाओ ही स्टार्ट किया करते थे. If Leao wasn't in his best form, our team would, go on and struggle. एंड वो मैच हम इवेंचुअली या तो हार जाते थे या तो ड्रॉ हो जाता था. और इस सीज़न एक अच्छी चीज़ ये है कि हमारा अटैक
लेआओ पे डिपेंडेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते हैं कि क्रिश्चियन पुलिसिच जो कि क्रिएटिवली बहुत ज़्यादा, यू नो, ही इज़ डूइंग प्रीटी वेल। आई हैव सीन पुलिसिच फाइंडिंग लेआओ from a very difficult spots where he just, I think there was a pass. I think the same goal which Giroud scored a penalty from, उसमें उस बिल्डअप को क्रिएट करने के पीछे भी I think Pulisic was involved behind the pass from where he finds Rafael, and that whole build-up was started from that moment. I think so. Yeah. So Leo ki individual performance was pretty average, I would say. He didn't do too much. He had very, amazing runs. Like always, he had some showboating on the left side. But I, we all expect a lot from Rafael Leo. हमारी expectation बहुत ज़्यादा high है because he is our best player. Still, he is and he was our best player. I don't know about the future, but I have pretty high hopes from Leo. I think the I think after changing his jersey, I am just being little bit concerned because whenever a player changes his jersey, I'm like okay, what is going to happen next with this player? Let's see, you know. But I think Leo will get back to his best form pretty quickly in the next few games because ऐसी विक्ट्रीज के बाद बहुत ज़्यादा encouragement मिलता है प्लेयर्स को। लाइक आप ही खुद सोचिए यार, 4-1 से टीम जीत रही है और कितना अच्छा माहौल हो ड्रेसिंग रूम में, और इट विल bring a lot of positive energy to all the players, and it will make them perform even, it will give them lots of energy to show their talent in the next game and show what they are capable of, and transpire all this desire from themselves into the pitch. I think next game is going to be against, let me check. Ah, Next game is going to be against AS Roma on Saturday, 2nd September. Okay, so Roma के against जो next match होगा AC मिलान का, it will be pretty crucial. बहुत ज़्यादा, you know, रोमा की टीम भी अभी रिसेंटली अपने मैच को शायद जीत गई है। ओके, सो Roma played against Hellas Verona today and they lost by 2-1. Before that, they played against Salernitana, sorry, and it was a draw. It was a two-goal draw. Both teams scored twice, and the game against Hellas Verona, Roma wasn't able to do anything. Like they never got into the lead, and they created they had like 23 shots on target. They had 23 shots, out of which they had 7 shots on target. They kept 72% possession. So Roma had, you know, Roma had all the possession, and yet they weren't able to win this game. On the other hand, Hellas Verona had like 5 shots, and out of which
Three were on target and they scored twice. So I think, okay, so Milan are on the top of the table as things stands. I mean, Napoli and Juve and Inter still have to play their games. So Milan are on the top. It is a very, amazing thing for us fans. And I think even after we have scored like 5 goals, not we have scored like 6 goals. So if any team has to surpass us, they will probably have to score at least. So Juve and Napoli would have to score like 3 goals each at least in order to, get into the same position as we are. So I think we will stay on top after the game week 2. But coming back to, the individual performances. So Leao was kind of fine today. I think he had better performance than the previous game. And let's move to the, you know, his partner in crime, Theo Hernandez. Theo Hernandez की performance काफी ज़्यादा, I would say, he had a much better performance than last game. एक गोल स्कोर किया उन्होंने एंड उनकी अभी भी मतलब कह सकते हैं कि वो वाली बात नहीं है जो थियो हर्नांडिस की है. लाइक ही वाज competing अगेंस्ट राहुल बेनलोवा जो कि इंटर मिलान के लिए खेला करते थे पिछले साल तक. इट वाज अ वेरी गुड कंपटीशन ऑन द लेफ्ट फ्लैंक और बहुत ज़्यादा खास कुछ ट्रबल नहीं कर पाए राहुल बेनलोवा थियो हर्नांडिस को. बट आई थिंक थियो after scoring this goal, he will get a lot of confidence, and you know, it brings like आप गेम वीक 2 में ही अगर गोल स्कोर कर देते हो तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है उसका. अगले मैच में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा लाइक आई हैव सेड अर्लियर. एंड ओवरऑल एक बहुत ही फन एनवायरनमेंट बन जाता है. ट्रेनिंग में आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर पाते हो. एंड अगर इस मैच को देखा जाए तो एक बहुत ही अमेजिंग विक्ट्री है ये मतलब एक टेम्पो बहुत ज़्यादा हाई टेम्पो सेट करने वाली है अगले मैचेस के लिए. अगर आप देखें तो गेम स्टाइल भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था. हम लोगों को जहाँ सेट बैक करने की ज़रूरत थी वहाँ पे सेट बैक भी किया. जहाँ पे काउंटर अटैक करने की ज़रूरत थी वहाँ काउंटर अटैक किया. बट यू नो पोजेशन विन करने में भी बहुत ज़्यादा हाई प्रेस भी किया कई इंस्टेंसेस पे. लाइक फर्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा अटैकिंग पेस में खेला गेम को. एंड किसी किसी पोजीशंस पे गेम में बहुत ज़्यादा लूज भी थी. जैसे कि मिडफील्ड के बारे में बात करना चाहूँगा. मिडफील्ड में आई डोंट थिंक दैट वी dominated this game, and the same thing happened with Bologna game as well. I think Milan needs a very good quality center defensive mid because as you can see we are really missing Kessie. कैसी की ज़रूरत अभी भी टीम को है. Now, lots of you would say that we have Musa. Musa भी इस गेम में आते हैं, but I will talk about him later in the stream. So I think we really need someone like a solid center defensive mid. एक solid center defensive mid आएगा तो क्या होगा जैसे राडे क्रूनिच जिनका मूव फेनेrbahce कि और ज़्यादा वो दिख रहा है ऐसे मतलब रूमर्स आ रही है. बट स्टिल देयर इज़ एनीथिंग सॉलिड अबाउट इट. सो
there is still no substance about this deal. So अगर आप देखें तो एक सॉलिड सेंटर डिफेंसिव मिड अगर आ जाए तो जो अटैक है लाइक रूबन लॉफ्टस चीक एंड तिजानी राइडर्स, ये लोग आगे जाकर के खेल सकते हैं, ओके। एंड दीज प्लेयर्स आरंट the ones who you expect to do the defensive work. Like they are not your typical center defensive mid. They are more like box. So they would prefer going into the attack and joining the attacking players and helping them out. अगर आप डिफेंस के बारे में बात करें तो मतलब you need a proper defensive mid. Someone like Cassie, or you can say uh, someone like you know I'm out of examples right here, but you can say someone like maybe Anguissa. I don't think Anguissa is that much defensive, but yeah, someone who can, do the dirty work, who can take on tactical fouls and, who can stop the attack from moving forward, who can stop the opposition attack from moving forward, not your attack. Okay. So I think Florentino Luis was a very good profile for our system, like the way we are playing right now, but he was very expensive, so you couldn't sign someone like him, who had moved to a European club earlier as well, but he failed at that club. So I think that's why he went back to Benfica, where he did a very decent job, but you can't really sign someone for like 40 million euros. And I think मूसा से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहेगी। मूसा अगर डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन में खेलने के लिए लाए गए हैं तो आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ विल ही प्ले। लाइक आई थिंक ही इज मोर लाइक अ बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर, बट आई होप कि ये दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है on how he will you know how he will be using Musa. And I think Musa यूएसए की टीम के लिए भी आई थिंक डिफेंसिव मिडफील्ड की पोजीशन में ही खेलते हैं, सो आई थिंक ही विल बी ओके विद दिस जॉब। बट लेट्स सी इन द नेक्स्ट फ्यू कमिंग गेम्स वी विल बी seeing him play from the starting spot, I guess, and we will discover more about it. वीक स्पॉट अगर इस गेम के बारे में बात करें, लाइक एवरेज परफॉर्मेंसेस, सो आई थिंक Calabria again, he was very average. He didn't do much, and his performance was, like, mm, like he did fairly, like his job was. I think Calabria wasn't up to the mark. He's the captain of our team, and he should be the one who, is supposed to lead this team, and not, you know, not just by being vocal, but also by action, Like a captain is supposed to lead the team with his actions. And Calabria, if you look at him, he doesn't transpire, his energy into the field. And आपको देख करके यार फीलिंग नहीं आती कि ये बंदा हमारी टीम का कैप्टन है, एसी मिलान का कैप्टन है, 7 टाइम्स यूसीएल विनर। उस टीम का कैप्टन बनना इज नॉट अ जोक। I really think that Calabria has all the things and qualities to be the captain of this team. Like he has been here since his childhood, but still, yeah, you need more. You expect more as a fan. I would still back Calabria, but I expect more of performances. Like I want them to do more on the attack. Provide more attacking options on the front, on the overlap. You have someone as amazing as Samuel Chukwu is on the right side now. Now you don't really have any kind of excuse. You are not playing with Messias or Alexis Salamakis on the
right flank anymore. So I hope that Calabria will, surprise us all like he did on that Napoli game, and he will bring out his A game. And this season he will, you know, and I hope that this season is going to be his one of the best seasons. And moving to the, I think let's move to the right flank now. We have talked about, I think, Christian Pulisic and Rafael Leao and Olivier Giroud. Giroud was okay. Let's talk about Giroud. So, okay, Giroud was kind of, he did a very good job, got two penalties, and he was very excellent at converting them. Both those goals, it is very easy to score one penalty against a keeper like Milinkovic Savic, who usually isn't that good, but when he's playing against us, he brings out his A game. There are these goalkeepers, guys, जो कि एसी मिलान के अगेंस्ट अपना मतलब यार ये मैनुअल नॉयर बन जाते हैं प्राइम या प्राइम ईकर कासियस बन जाते हैं प्राइम जीजी बुफॉन बन जाते हैं मतलब इन्होंने नाक पे दम करके रखा है और मिलिंकोविच साविच जो कि आई थिंक ही इज यू नो younger brother of Sergio Milinkovic Savic. I don't remember if he's younger brother or he's younger or the elder one, but yeah, he is literally Sergio Milinkovic Savic's brother. And यार ये बंदा नाक में दम कर देता है कई बार एसी मिलान के अगेंस्ट. आज भी उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डिसेंट थी, बट लाइक इतनी ज्यादा अटैकिंग क्वालिटीज के सामने थोड़ा बहुत यू नो डोमिनेट हो जाता है. और इसमें डिफेंस की भी गलती उस टीम के टोरिनो के, क्योंकि दो पेनल्टीज कंसीड करना इज नॉट यू नो व्हाट योर गोल कीपर वुड ड्रीम ऑफ. सो इस गेम का अगर मैं रिएक्शन दूं तो जिरूड की परफॉर्मेंस वाज ही वाज ही वाज फाइन, ही डिड हिज जॉब वेरी वेल. अपनी जॉब बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी जॉब को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म करते हैं ओलिवर जिरूड. और बहुत ज़्यादा अमेज़िंग, बहुत ज़्यादा सॉरी. सो अपनी परफ़ॉर्मेंस को बहुत जितना उनका काम था उन्होंने कर दिया. और ही इज़ 34 इयर्स ओल्ड येट ही इज़ स्टिल रनिंग वाइल्ड. एक शॉट जिरूड ने लिया था जो कि एक यू नो हाफ टर्न में वॉली मारी उन्होंने, जो कि शायद गोल भी हो सकता था, इतना अमेज़िंग शॉट था. अगर वो गोल चले आता तो वुड हैव बीन लाइक one of his magical moments, जो कि ज़रूर is very famous of creating. बहुत ज़्यादा अगर आप देखा जाए तो इस मैच में मतलब जब पहला गोल पड़ गया था यार उनकी तरफ से, उसके बाद तो मतलब मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अब गई एसी मिलान, अब तो मतलब गए. बट उसके बाद ज़रूर को पेनल्टी मिलती है और बहुत ज़्यादा एक काम कंपोज काम और कंपोज्ड उनकी जो पर्सनैलिटी है वो जब मतलब पेनल्टी लेते हैं तो बहुत ही इफेक्टिव होते हैं जरूर. बहुत रेयरली मिस करते हैं पेनल्टी. लाइक यूसीएल में जो पेनल्टी मिस करी थी नापोली के गेम में, उससे पहले आई थिंक वो 10 साल से पेनल्टी मिस नहीं की थी उन्होंने अपने करियर में. सो दिस शोज हाउ confident he is while taking penalties. So he is one of the very best at the business. And अगर हम मिडफील्डर्स की बात करें, so I think Tijani Reinders was amazing again. He had a very decent game. Wait a second.
Okay. ओके, सो टिजानी रैंडर्स की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी आज फिर से। और ये उनकी पासिंग, he was, like his passing and the way he, is all over the pitch. Like, यार ऐसा यकीन नहीं होता है कि ये प्लेयर हमने इसी समर में साइन किया है, because the way he has blended into the squad, and he is probably so far one of the best signings that we have made in the summer window, along with Christian Pulisic. Like, I think he is the best. Along with Pulisic, he's right up on the top. दोनों प्लेयर्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं, मतलब इतना जल्दी टीम में ब्लेंड हो जाना और इतना ज़्यादा इफेक्टिव होना और इतना ज़्यादा हेल्पफुल होना, बिकॉज as you can see, we are missing, like, in attack. I can understand we still have Leao, we still have Giroud, but अगर आप मिडफील्ड की बात करें तो वी आर मिसिंग इस्माइल बेनासर, जो कि probably सीरिया के one of the best midfielders हैं. Team like Barcelona are behind that guy, so there must be some quality. And we all know how important Ismail Benacer is for our team. We, you know, we are missing Sandro Tonali. उनको हमने सेल कर दिया. So आप किस लेवल के प्लेयर्स को रिप्लेस कर रहे हो इतनी सीमलेसली, ये बहुत बड़ी बात है. इतना इजी नहीं होता है किसी भी टीम में आप जाओ और इतना जल्दी ब्लेंड हो जाना और फिट हो जाना राइट अवे इज नॉट इजी. एंड यू नो इस चीज़ के लिए मतलब स्काउटिंग डिपार्टमेंट की बहुत ज़्यादा तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि पता नहीं यार, इतने क्वालिटी प्लेयर को, आई थिंक बार्सिलोना वर बिहाइंड देम एज वेल. लाइक I have seen some, articles where, I have read that even Barcelona were waiting. Barcelona were trying to get him on board, but excuse me, he rejected them, I guess, and he only wanted AC Milan. So big ups, to our scouting department for finding such a gem. And he had got great qualities. His passing is amazing, and he's all over the pitch. Like, he's everyone is saying that he's an Indian, and they are all very correct about it, because आप जब देखो यार, ये डिफेंस में भी हेल्प करता है, ये अटैक में भी हेल्प करता है, ये मिडफील्ड में भी है. ही इज ऑल ओवर द पिच एक्चुअली. एंड रियली आई एम रियली वेरी एक्साइटेड, एंड आई एम वेटिंग टू सी मोर ऑफ हिम. ये प्लेयर और कितना ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है. एंड इमेजिन हिम एंड इस्माइल बेनासिर both forming a double pivot. Like, it will be amazing. Like, both players have so much you know quality. They both can dribble past anyone pretty easily. They both have amazing work rate, and I think creativity भी बहुत ज़्यादा amazing है इन दोनों players की. So I'm really looking forward to seeing that partnership, but it is not going to happen anytime soon. So let's hope that Ismail Benacer have a speedy recovery. Now, now let's talk about Yunus Musa. Yunus Musa, or I think we have talked about Musa. So let's just move to our big right wing signing, Samuel Chukwueze. So Samuel Chukwueze had, I think he only had mm, 30 to 35 minutes of playtime, but I think it was his debut, and that too on San Siro.
एंड हमारी टीम के लिए पहला मैच खेला उन्होंने आज अपने डेब्यू में. इट वाज काइंड ऑफ, you know, like he wasn't that effective what we were expecting from him. Like, we thought that he is going to be the next Leo, but Leo on the right. I think it is, very reasonable to have such high expectations from a player of that quality, but it will take time, guys. टाइम तो लगेगा, इतनी इजली सब चीज़ें नहीं होने वाली. बहुत टाइम लगेगा इस सीजन में. हमें मतलब प्लेयर्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा. आई डोंट नो कि इतना क्वालिटी वाला राइट विंगर लास्ट टाइम हमने कब साइन किया. सो वी हैव टू पुट ऑल आवर फेथ इन दिस गाय एंड लेट्स सी how it goes. And it's his first game only, so it will take time. I think this is the very first time he played for us, or he had played in the preseason games. I don't remember. I think he has played only one game in preseason. I don't know if I'm right or not, but yeah. So it was his debut on the you know San Siro. So I think Samuel Chukwueze को टाइम लगेगा थोड़ा सेटल होने में टीम में, बट जब तक वो सेटल होते हैं तब तक क्रिस्टियन पुलिसिच अपने फॉर्म को कंटिन्यू रखे, इस चीज़ की होप करता हूँ मैं. और अगर ऐसे चलते रहेगा तो कोई दिक्कत आने नहीं वाली हमारे अटैक को. और नोआ भी सब्स्टिट्यूट होते हैं. आई थिंक 68 मिनट के बाद में जिरूड जिरूड और ओकाफोर के बीच में सब्स्टिट्यूशन होता. सो ओकाफोर, he was also very, like, I think he will take time, but just I don't know what role is he going to play. Is he going to be a right winger, or is he going to be a center forward? This question, sorry, is he going to be a left winger or center forward? So I think he can substitute. I think he can supplement both the positions, and he is very effective on both of those positions. In his Salzburg, like last season when he was playing for Salzburg, he used to play on the left flank as well, and on the center forward position as well. So this player can play both, but we will have to see like how it goes. There are rumors कि हम एक सेंटर फॉरवर्ड को भी साइन करने वाला है. जैसे कि अगर अगर कोलंबो लीव्स अगर कोलंबो लीव करते हैं इस क्लब को, तो मोस्ट प्रोबेबली मोंजा को ज्वाइन करने वाला है. एंड अगर वो मोंजा ज्वाइन करते हैं तो इन दैट केस मिलान आर लुकिंग फॉरवर्ड टू साइन अ सेंटर फॉरवर्ड. और अगर ऐसा होता है सो और अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम और अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम मैदी टारेमी को साइन कर सकते हैं, जो कि जिनके साथ आई थिंक लिंक्स हमारी इट हैज़ बिन आई थिंक he was among the very first players that we were linked with, you know, even before Moose. I think Musa, yeah, we were linked with him. It's like it has been like 2 months now since we were linked with him. अगर हम उन्हें साइन कर लेते हैं तो हमारा अटैक बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट हो जाएगा, बिकॉज ही इज समवन who has got so much experience. He is 31 years old. He plays for Porto. UCL में बहुत ज़्यादा गोल स्कोर करते हैं. ये भी है कि बहुत सारी टीम्स के अगेंस्ट उन्होंने बहुत ज़्यादा गोल स्कोर नहीं किए हैं. Like most of his goals come from small teams. But if you are surrounded by this much quality, I don't think that anyone can stop you from scoring.
team like Spurs wanted him to, be a replacement for Harry Kane. So there must be something. आई थिंक एसी मिलान में अगर मैरी टारेमी आते हैं तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो जाएगा हमारा अटैक। चार चांद लग जाएंगे हमारे अटैक को। और उस क्वालिटी का प्लेयर अगर आपकी टीम में खेल रहा है तो आप मतलब सोचिए, एक साइड में ओलिवर जिरूड है जो कि मतलब प्रोबेबली आई थिंक ओलिवर जिरूड इज वेरी अंडररेटेड बट ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट सेंटर फॉरवर्ड out there right now. I think Giroud is very intelligent. He has limited qualities because he's not that fast. But the things that are good about Giroud are like that is out of this world. Like he is super amazing in all the things which you know like जिस चीजों में Giroud अच्छे हैं वो उस चीजों में मतलब टॉप हैं। अगर आप देखें तो मतलब फिजिकलिटी और Giroud की इंटेलिजेंस, सही पोजीशन में सही जगह में होना और ये सारी चीज़ें ज़रूर बहुत ज़्यादा एक यूनिक प्लेयर बनाती है। और अगर आप उसमें एक और प्लेयर ऐड कर देते हैं जो कि मेहदी टारेमी है, जो कि 31 ईयर्स ओल्ड है। अगर उस क्वालिटी का प्लेयर आप मतलब सोचिए खुद ही, इतने खतरनाक प्लेयर्स के साथ हमारी टीम क्या कर पाएगी। एक साइड क्रिस्टियन पुलिसिच है, सामा चुक्वेज़ है, राफेल लेआओ है एंड नोआ ओकाफोर हो गए, जिरूड एंड नाउ यू ऐड मेहदी टारेमी इनटू द इक्वेशन। अगर आप खुद ही सोचिए कितना अमेजिंग हो जाएगा हमारा अटैक। एक प्लेयर से और हम लिंक्ड हैं जो कि रोमेलू लुकाकू। नाउ वी वर लिंक्ड विद हिम yesterday. There were rumors that Milan is going to Milan is going to sign him, or maybe they will try, like he was offered to us. But then again, today rumor came out that he is probably going to join AS Roma. AS Roma जो कि स्ट्रगल कर रही है। They have lost Tammy around Tammy Abraham for like I think 8 or 9 months. He's going to stay out of. I don't think. I think Tammy got an ACL injury, if I'm not wrong. I think he will be for like at least 8 or 9 months. So that is why they are going for a striker. Uh, they have signed Sardar Azmoun, जिसके साथ हम linked थे 2-3 रोज पहले. But you know, again, it was he was offered from the intermediaries और हमने मतलब कोई उतना ज़्यादा बड़ा स्टेप नहीं लिया उनको साइन करने के लिए। अगर आई थिंक अगर मिलान चाहती तो शायद उन्हें साइन कर पाती बट आई थिंक ही हैड अ वेरी ओवरवेलमिंग सीजन with Eintracht Frankfurt. No, I think he was with Bayer Leverkusen. Okay. Yeah, so he had like he played 26 games and had only 4 goals if I'm not wrong. Let me check it real quick. Okay. So, yeah, he played 23 games and had 4 goals in Bundesliga and also played Europa League 7 games, had 0 goals and only 1 assist. So he had like 5 goals and 2 assists. Okay, so it was like I don't know how much game play time he had, but he was like not that effective. So this profile is I don't regret not signing him. Like it's okay. AS Roma needed a center forward, so it's good for them. So Roma Lukaku se linked hai. So I'm just wondering how it is going to be for Inter fans because I don't have any hate for them or I don't have any hate for any other clubs. But अगर आप देखें तो मतलब कितना ही अजीब प्लेयर है यार ये लुकाकू
इसको एक भी मतलब बिल्कुल भी शर्म नहीं है। कुछ समय पहले ये कहता है कि इंटर मिलान इज माय होम, लोतारो मार्टिनेज इज माय ब्रदर, एंड आई विल वन डे आई विल कम बैक टू इंटर एंड देन आई विल प्ले फॉर द। उसके बाद आप लड़ झगड़ के चेल्सी से इस मूव के लिए फाइट करते हो, और यहाँ पर आने के बाद आप यू नो यूवेंटस के साथ यूसीएल फाइनल के पहले डीलिंग कर रहे हो कि मे बी वी कैन नेगोशिएट अ कॉन्ट्रैक्ट। So it is, very demeaning to a club. And I think Lukaku is getting what he deserves. And रोमा में अगर जाएंगे तो आई होप कि थोड़ी समझ आ जाए, जोजे मोरिनो थोड़ी समझ डाल दे उनके दिमाग में। एंड आई एम रियली वेरी ग्लैड दैट वी आर इन साइनिंग रोमेलू लुकाकू नाउ। अगर आप देखें तो, एक सेकेंड सॉरी, अगर आप देखें तो एसी मिलान बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही है कि वो अपने जो प्लेयर्स इनको रखना नहीं चाहती, समन लाइक अलेक्सिस सालामेकर एंड डिवॉक ओरिगी, इनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है। रियाल बेटिस के साथ आई गेस अलेक्सिस सालामेकर की लिंक आई है। डिवॉक ओरिगी का अभी तक पता नहीं है कि क्या होने वाला उनके साथ। एसी मिलान चाहती है कि इन प्लेयर्स से पीछा छूटे, और जैसे ही अगर एसी मिलान यू नो एक सेंटर फॉरवर्ड को साइन करने में कामयाब होती है, उसके बाद एसी मिलान के पास एक चांस है कि वो एसी मिलान के पास एक चांस होगा कि वो एक आ, अगर एसी मिलान एक सेंटर फॉरवर्ड साइन करने की कोशिश में कामयाब होती है, तो उनके पास एक ऑप्शन होगा कि वो हमारे यंग सेंटर फॉरवर्ड कोलंबो को यू नो टीम से फॉर गेनिंग मोर एक्सपीरियंस मोन्जा में शिफ्ट कर पाएंगे। इट विल बी अ लोन मूव आई गेस, बट लेट्स बी होपफुल। मैं तो चाहता हूँ कि एसी मिलान एक सेंटर फॉरवर्ड को साइन करे, बिकॉज आई थिंक नोआ ओकाफोर इज अ गुड प्लेयर, बट आई एम नॉट you know completely convinced कि he will be able to handle our attack along with Giroud, because Giroud is doing good job right now, but we all know कि Giroud एक गेम दो गेम अच्छा खेल उसके बाद फिर वो गोल्ड राउट में चले जाते हैं 8-9 गेम पे। So I don't have any high hopes with, like, I really like them, but I still want one more center back, at least someone who can score at least 8 or 9 goals, if not 20. We don't need a center forward who can score like 20, 30 goals. We need someone who can provide us attacking contribution. Someone like Noah Okafor, for example. I think Noah Okafor is good enough to score like 8 or 9 goals a season at least, like how Ante Rebic used to be for us season prior to this. He was always scoring like 10 goals in the second half of the season, which is, a very difficult thing to do in Syria, because all the teams, they sit back and they would, not let you score, especially in the second half of the season. So Ante Rebic was a very big reason why we, got into the top four. So अगर एसी मिलान मैरी तारेमी को साइन करने में कामयाब होती है, सो अगर ये हो गया, तो अगर ये मूव सक्सेसफुल हो गया, तो मतलब हमें कोई रोक नहीं सकता। फिर मतलब हमारा अटैक बहुत ही ज़्यादा डेंजर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। आई थिंक दैट वाज इट फॉर टुडे। वी विल सी हाउ थिंग्स मूव फॉरवर्ड इन द कमिंग ट्रांसफर मार्केट। ओनली आई गेस 4 or 5 days the transfer market is gonna close in like 31st of August. So जैसा भी होता
देखिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होगा नेक्स्ट मैच होने वाला है एस रोमा के साथ. So I will probably do a live stream before that game as well. Like we will do the pre-game session, and after that we will do the post-match review. So stay tuned with this channel. This is very new channel, and I hope if you like this video, please do subscribe to our channel, and stay tuned because we have lot because we have a lot of other things going on with this channel. I'm trying to uh, I'm trying to learn lots of other things, and trying to make more interesting content related with AC Milan and Syria in general. So I would also try to make an overall Syria game, review. Like we'll cover all the games. And yeah, one more thing. So I think Atlanta played with Cremonese. Was it Cremonese? I think yeah, it was Frosinone. No, wait, let me check. Okay, so Atlanta played with Frosinone today, and they lost this game by 2-0, 2-1. Sorry, so they lost this game by 2-1. And one thing that I've realized that Escobio Di Francesco is back in Serie A, baby, and he's coaching Frosinone. So sorry, they won this game very convincingly, scored two early goals. First goal on the very fifth minute, and the second one came on like 24th minute. So it was a very decent game by Frosinone. This team is, looking pretty interesting. Winning, winning against Gasperini's Atlanta is always a very big deal. Last year they didn't lose any game up until the 10th game week. So, losing the second match of the season is like it is very difficult to win against Atlanta. So yeah, Syria is going pretty wild this season. Lots of amazing things are happening, and I hope that I will bring more videos like these. I will try to make more videos on Syria in general, but let's hope कि अगला गेम भी जल्दी आए ताकि हम एक और लाइव स्ट्रीम कर पाए एसी मिलान. एंड इफ यू लाइक द स्ट्रीम प्लीज गिव इट अ लाइक. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए इस वीडियो को. If you have friends who watch Syria, share it with them, and let's see what happens next. एसी मिलान का ये गेम वीक बहुत ज़्यादा अच्छा था. एक बहुत ही एनकरेजिंग रिजल्ट और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डालता है फैंस में भी और प्लेयर्स में भी. सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट गेम एंड आई कांट रियली वेट टू सी मोर कमिंग फ्रॉम new players, and I'm really very excited to see what the management and you know and what our management is going to do with transfer market. उम्मीद तो ये है कि और भी नए प्लेयर्स आएंगे. Like one center forward is a must, and if Rade Krunes leaves, then probably one more center defensive midfielder. But you know, पता नहीं क्या होने वाला है. Let's be hopeful and let's see what happens. So I think that's enough. Now I will end. Now I'm going to end the stream. So thank you very much for joining this video, and see ya. Take care. Bye bye. Forza Milan.